for two different points to be in phase, डायग्राम नहीं ड्रॉ कर लें या स्लाइड 2 पे एक और ड्रॉ कर लेते हैं। स्लाइड 2 पे एक नई एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है। Okay, slide 2. Here is this, here is this, here is this. Okay, and here is a wave and here too. ठीक है। एक बात तो ये कि वेव में for two points to be in phase, they have to be on the crest. They have both to be on the crest, yeah, they are both to be on the trough. First thing. So here is point A, here is point B, and let's say here is point C. ठीक है। And when we say 2 points are in phase, they have to be at equal displacement. इनकी displacement जो है वो equal. First of all, if one is in crust, the other has to be in crust. So point A and B are completely in phase with each other, and point A and point C, they are completely out of phase with each other. ठीक है। ठीक है। So this is what phase is. Another thing about waves, के let's say कि waves, there is one wave traveling. If another wave comes in and this wave lies exactly over this first wave, so this would cause amplification. The resultant wave would have double amplitude. The resultant wave would have double amplitude. ठीक है। And if for example two waves, the crest of one overlies the trough of the other, so the second wave is for example like this, इनकी जो resultant wave होगी, that would be a straight line. They would cancel out each other. So the more they overlap each other, the more they amplify, and the more they sort of cross each other, the more they nullify the effect of each other. ओके। ठीक है जी। अच्छा, let me open the book. At this point I should open the book. इसके बाद हमारे पास क्या है? Six. Okay. Property is wave equation. Wave equation में we write velocity of a wave is equal to v is equal to f lambda, where v is velocity, f is frequency, and lambda is wavelength. ओके। अच्छा जी, this. ठीक है। Next thing that we have got is wavefront and rays. So इसकी definition लिख लेते हैं। Wavefront, ठीक है। Wavefront हमारे पास क्या होता है? Wavefront is a point on which we take a particular point of phase. So for example, if we are talking about crests, ठीक है, if we have got,
let's say a complete wave, and out of that complete wave we just pick up one point. ठीक है, तो Okay. that would be our wavefront. um ठीक है, if instead of drawing complete waves I simply draw all the crests, okay, this would be the wavefront. Okay. Instead of drawing the complete wave, I take just one point, and for all the waves, I'm drawing that same point. For example, crest of a wave. That would give me the wavefront. So if I have to write definition, I'll write. Mhm, 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 mhm. At all points, for example, crests of a crests of a wave. ठीक है जी, ठीक है जी. Then we have got a reflection, refraction, and diffraction. Okay. Do we know the difference between reflection and refraction? Reflection and refraction? Yes. No. ठीक है. Reflection is when a wave, when a particular ray. So, for example, I've got a ray. It's it hits a particular object or a particular medium, and then it bounces back in the same medium at a changed path. Okay, Okay. reflection is when a ray or a particular wave, the phenomena is observed in waves as well, it hits a particular medium and it then changes its path in the original medium. पहले medium में ही travel करती रहती है, that is reflection. So Okay. this will be reflection. Okay. But if this initial ray it enters that second medium with a slight bit changed, would be when a ray or a wave it hits a particular object or a particular medium and changes its path in the new medium. This is refraction. अच्छा जी, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. Then the third thing that we have got is diffraction. डिफ्रैक्शन में क्या होता है? डिफ्रैक्शन में ये होता है, अगर मैं ये इरेज कर दूं, I've got this small opening and let's say a wave approaches this small opening. When it hits this opening, इसके बाद क्या होगा? Would it shrink? Would it reflect? वेव में क्या होगा इसके बाद? Waves में the narrower this path, the narrower this path, the more it spreads out. ठीक है, तो इस path से निकल के it would spread out more. This is opening. It expands, or its wavefront expands as it goes through that opening, and this expansion in the wavelength is called diffraction. या अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है. Then we have got wave theory. वेव थ्योरी पहले लिख लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेते हैं.
Mm, give me a second. You've got wave theory. Mm, mm. If the position of a wavefront is known at one instant, ठीक है, is known one instant its position at a later time can be found using Huygens construction. ठीक है जी. Each point on the wavefront can be considered to be a source of considered to be a source for secondary spherical wavelets. Hmm. which spread out which spread out at wave speed. At wave speed, the new wavefront is the surface that touches all the wavelets. The new wavefront surface that touches all the wavelets. ठीक है जी, ये लिख लें, फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमने जो लिखा है इसका मतलब क्या है. ठीक है मैडम, इस तरह से. ठीक है. एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम टी वी वांट टू फाइंड आउट कि नया जो हमारे पास वेव फ्रंट होगा वो कहाँ पे होगा. तो वी विल टेक डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस ओरिजिनल. लेट्स से इस पॉइंट पे आए तो हमारे पास यहाँ वेव आती है,
इस पॉइंट पे आए तो हमारे पास यहाँ पे वेव आती है। ओ गिव मी अ सेकंड, ये यहाँ पे आ जाएगी। इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे आ जाएगी। द न्यू वेव फ्रंट वुड बी वेयर इट टचेस all the particular new wavelets। ठीक है। आपको वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट समझ आया बाय द वे? जी ठीक है। आपने ये पहले पढ़ा हुआ है स्कूल में या दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर स्टडीइंग दिस थिंग? ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं जनाब के हमारे पास डू वी नीड टू स्टडी, गिव मी वन सेकंड, मैं एक चीज़ चेक कर लूँ कि ये जो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, इज इट पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट, इसमें वेव फ्रंट्स में। गिव मी जस्ट वन सेकंड। IGCSE फिजिक्स सिलेबस। आपके एग्जाम्स 2022 में होने हैं राइट? जी फिजिक्स कंट्रोल F वेव प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। ठीक है, V इज इक्वल टू F लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ गैप साइज अफेक्ट्स डिफ्रैक्शन, दैट्स इट। Waves can undergo reflection at a plane surface. Wave undergo refraction due to change of speed. ठीक है ये चीज़ें। ठीक है, let's see, let's see, let's see, let's see. So we have got this initial wavefront AB. Mm, this is the surface, and we have got wavefront AB. Mm, this is the wavefront AB. Okay, so the angle of this wavefront is, let's call it I, angle of incidence. ठीक है, B re, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी राइट एंगल पे, दिस, यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। ठीक है, एंड इफ आई एक्सटेंड दिस फर्दर यहाँ पे and call this point B dash, B dash। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो what I'll have to do is के I'll have to use this radius, which radius, uh, B, B dash, okay, and from this point A I have to draw an arc like
this, ठीक है, this arc is equal to BB dash. Let me like this. ठीक है. So from A till this point, A to A dash, it is equal to BB dash. लेकिन द क्वेश्चन इज, एक सेकंड मैंने एक चीज स्किप की है बीच में. आर्क मैंने लगा ली, drawn about A from B dash. ठीक है, ठीक है, B dash से टेंजेंट. I'll have to do one more thing. I'll have to do one more thing before I connect this. मैं यहाँ से पॉइंट बी डैश से इस पर्टिकुलर आर्क जो मैंने ड्रॉ की है इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. लेट मी से, ओए, can I can I somehow draw a tangent? ठीक है जी. पॉइंट बी डैश से, अच्छा अगेन लेट मी जस्ट रिकैप. हमने सबसे पहले एक सरफेस लिया. इस सरफेस पे पॉइंट ए बी एक वेव फ्रंट आके हिट कर रहा है. पॉइंट ए डेफिनेटली पहले हिट करेगा, पॉइंट बी बाद में हिट करेगा. ठीक है. तो हमने पॉइंट बी को आगे एक्सटेंड करके एक इमेजिनरी लाइन अगर बी डैश तक ले आए तो दिस डिस्टेंस बी बी डैश, यहाँ से हम पॉइंट ए पे रख के बी बी डैश के बराबर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी डैश आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस आर्क. ठीक है. And then where this tangent and this line of tangency and this arc they intersect each other, यहाँ मैं point a dash से a dash draw कर दूंगा. So the original wavefront was AB, and now the reflected wavefront is a dash b dash, and it's moving in this direction. ठीक है, हम लिख भी लेते हैं सारा. ये ड्रॉ कर लें पहले, फिर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ आपको. ठीक है जी. हमारे पास this would be the angle of reflection R. Angle I would be equal to angle R. Again we'll write it in a bit. और यहाँ पे अगर मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर लूँ तो this is angle R as well. Okay, on slide 3 let's write down the steps for this. Hmm. Okay. Consider a wavefront AB incident at an angle I on a reflecting surface the wavefront has just reached at surface A has just reached the surface at A has just reached the surface at A the position of the wavefront
Um, a little later, when B reaches the reflecting surface, can be found using Huygens construction. ठीक है जी. A circle of radius B B dash is drawn about A is drawn about A. The reflected wavefront the reflected wavefront is then A dash B dash. The tangent to the wave the tangent to the wavelet from B dash. Hmm, B dash.